गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है आईएनएस वागीर। तो प्रोजेक्ट 75 जो है हमारा इंडियन नेवी के लिए सबमरीन्स बनाने का, तो उसके अंदर जो फिफ्थ नंबर की सबमरीन है वो तैयार हो गई है। उसने सी ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं। तो इसको लॉन्च तो आपको पता है कि नवंबर 2020 में किया गया था माज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा, लेकिन इसकी जो सी ट्रायल्स हैं वो अब शुरू हुए हैं। तो इसके सी ट्रायल्स कंप्लीट होने के बाद इसको जो है वो आपको पता है कि इसको कमीशन कर लिया जाएगा इंडियन नेवी में। अब ये आईएनएस वागीर जो है आईएनएस कलवारी क्लास की एक सबमरीन है। अब ये भी देखेंगे कि कलवारी क्लास कैसे नाम पड़ा। हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया, बट हम दोबारा से इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये सबमरीन जो है इंटेंस सी ट्रायल्स में जाएगी। उसी के बाद जो है इसको कमीशन किया जाएगा इंडियन नेवी में, और कहा जा रहा है कि 2022 के एंड तक जो है इसको कमीशन कर लिया जाएगा। तो पहले तो देखते हैं प्रोजेक्ट 75 क्या है। तो 6 सबमरीन्स बनाने का प्रोजेक्ट है स्कॉर्पियन डिज़ाइन की। स्कॉर्पियन डिज़ाइन किसने दिया है हमें? नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस जो है, उन्होंने हमारे साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके 2005 में एग्रीमेंट साइन किया और माझगांव डॉक लिमिटेड को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की कि आप ये 6 सबमरीन्स बना सको। तो ये कलवारी क्लास जो सबमरीन है, ये एक्चुअली में इंडिया के पास असल में फर्स्ट सबमरीन जो आई थी आईएनएस कलवारी ही थी, जो कि यूएसएसआर ने इंडिया को 1967 में दी थी। उसके बाद हम उसी का नाम जो है वो दोबारा यूज़ करके ये 6 सबमरीन्स बना रहे हैं। तो जब सबसे पहली सबमरीन थी वो आईएनएस कलवारी ही थी। इन 6 में भी जो सबसे पहली बनाई गई उसका नाम भी कलवारी था। तो जो फर्स्ट नेम होता है जो जिस सबमरीन का, उसी के उस पे बाकी सबमरीन्स के भी उस क्लास डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो नेमिंग ऑफ द वेसल ऐसे ही किया जाता है, जिनका सेम मेक, सेम डिज़ाइन, पर्पस, डिस्प्लेसमेंट हो, उनको जो है वो पहली सबमरीन के नाम पे ही उनका नाम रख दिया जाता है। तो जैसे कलवारी का नाम है, कलवारी का मतलब क्या होता है? टाइगर शार्क। तो जो इसमें वागीर जो अब सी ट्रायल्स चल रहे हैं, इसके उसका नाम वो किसके नाम पर रखा गया है? सैंड फिश के नाम पर। तो ऐसे ही अलग अलग शिप्स हैं इसके अंदर, खंदेरी, करांज। ठीक है, तो ये वेला, ये सब जो है अलग अलग नाम पर कुछ ना कुछ इसके मीनिंग्स हैं। ठीक है, तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है ऑफ कोर्स। तो अब टेक्निकल डिटेल्स देखते हैं। तो फ्रेंच डिफेंस मेजर नेवल ग्रुप जो था डीसीएनएस और स्पेनिश स्टेट ओन्ड एंटिटी नेवांटिया, इन्होंने मिलकर इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो है ये एग्रीमेंट साइन किया था 2005 में। और ये स्कॉर्पियन क्लास ऑफ सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी जो थी वो इंडिया के साथ शेयर की, ताकि माझगांव जो डॉक लिमिटेड है वो ये सबमरीन्स बना सके। तो ये डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम्स हैं, याद रखो। न्यूक्लियर सबमरीन्स नहीं है, ये डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन से चलती हैं। और ये अलग अलग तरह के नेवल कॉम्बैट ऑपरेशन जैसे एंटी वॉरशिप, एंटी सबमरीन ऑपरेशन, इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्वेलेंस, नेवल माइन लेंगे, ये सारे ऑपरेशन कर सकती हैं। अब इसके अंदर अब आपको पता होगा एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। ये क्या होता है कि एक सबमरीन को ये अलाउ करता है कि वो बहुत लंबे टाइम तक पानी के नीचे ऑपरेट कर सके, उसको बार बार ऑक्सीजन के लिए जो है वो ऊपर ना आना पड़े। तो या तो ये न्यूक्लियर सबमरीन्स कर पाती हैं, अगर नॉन न्यूक्लियर सबमरीन है तो उसमें एआईपी लगा दिया जाता है ताकि वो लंबे टाइम तक पानी के नीचे रह सके। तो इस कलवारी क्लास ऑफ सबमरीन से हम बहुत सारे टॉर्पीडोज और मिसाइल्स भी लॉन्च कर सकते हैं। तो अब इसकी स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस क्या है कलवारी क्लास ऑफ सबमरीन्स की? तो देखो, इंडिया के पास दो जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स है, एक तो चक्र और अरिहंत। फिर उसके बाद 14 सबमरीन्स जो है हमारे पास, कलवारी, शिशुमार और सिंधु घोष हैं। ठीक है, तो अब न्यूक्लियर पावर्ड भी हैं, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स भी हैं, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है हमारे कैरियर बैटल ग्रुप्स को जो है वो पूरा होने में। ठीक है, तो मतलब कि कुछ मिनिमम सबमरीन्स जो हैं किसी भी नेशन के पास होनी चाहिए या किसी भी एक कैरियर बैटल ग्रुप के पास होनी चाहिए, ताकि वो उसकी एक स्ट्रेटजिक डेटरेंस बना सके वो। ठीक है, तो अभी इंडिया के पास उतनी सबमरीन्स नहीं है जितनी उसको चाहिए, और अपने कैरियर बैटल ग्रुप को पूरा करने के लिए जितनी सबमरीन्स चाहिए उतनी अभी नहीं है। इसीलिए इंडिया जो है वो बना रहा है अभी और सबमरीन्स को। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस क्या है कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ सबमरीन्स को पूरा करने के लिए इन सबमरीन्स का बनाया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी हम एक तरह से इंडिजिनसली बना रहे हैं, हमारा मैज़गांव डॉक जो है वो ही बना रहा है इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। तो इसी ओकेजन पर सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट जो है उसको
इंडिया ने एस्टैब्लिश किया है चेन्नई में। तो वेटलैंड क्या होता है, सबसे पहले तो देखते हैं। तो जो ट्रांजिशनल लैंड्स होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक सिस्टम इकोसिस्टम के बीच के जो लैंड्स होते हैं उनको हम वेटलैंड्स कहते हैं। तो इसी ओकेजन पर दो न्यू रामसर साइट्स, खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात की और बघीड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यूपी की, उनको भी हमारे रामसर जो है साइट्स में कवर कर लिया गया है। ठीक है, तो अब इस साल का वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो अब इंडिया के पास 4.6% जो लैंड है वो वेटलैंड्स है, और 15.26 मिलियन हेक्टेयर्स जो है इंडिया के पास टोटल वेटलैंड्स है। उसमें से 1.09 मिलियन हेक्टेयर्स के आसपास जो है हमारे अ, रामसर साइट्स हैं। ठीक है, सो अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जो ये हमने सेंटर बनाया है, इससे होगा क्या कि स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सकेंगी ताकि हम वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बना सके। तो रामसर कन्वेंशन के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल इन्वायरमेंट ट्रीटी है, 1975 में ये इन फोर्स हुई। ऑफ कोर्स साइन इसको 1971 में किया गया था। ईरान की एक सिटी है रामसर, वहाँ पर इसको साइन किया गया। तो इसके तीन मेन पिलर हैं। एक तो ये है कि वाइज यूज़ किया जाए वेटलैंड्स का, दूसरा है इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट की जाए उनकी, तीसरा है इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेशन करना। तो एक तरह से कंजर्वेशन और वाइज यूज़ ऑफ ऑल वेटलैंड्स जो है वो इसका मिशन है। तो इंडिया के में अभी टोटल, अभी जो दो न्यू साइट्स को अगर हम दोनों को भी गिन लें तो टोटल 49 रामसर साइट्स हैं। सबसे पहली रामसर साइट जो थी वो कोबोग्स पेनिनसुला में थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। 1974 में उसको जो है वो अनाउंस किया गया था, डेजिग्नेट किया गया था। सबसे ज़्यादा कंट्री जिसमें रामसर साइट्स हैं वो है यूके, और उसके बाद है मेक्सिको। तो ये रामसर कन्वेंशन कोई लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन नहीं है, और ना ही ये यूनाइटेड नेशंस या फिर यूनेस्को का पार्ट है। ठीक है, तो याद रखना है आप। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में ये अनाउंस किया है कि वो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जैसे जो आपकी क्रिप्टो करेंसी हैं उसके ऊपर 30% का टैक्स रखेंगे। जो उससे अगर आपकी इनकम हो रही है तो आपको 30% उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप कोई ट्रांसफ़र करते हो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का तो उस पर 1% टैक्स जो है वो, अगर एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उस पे 1% का टीडीएस देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब वर्चुअल डिजिटल असेट और डिजिटल करेंसी में क्या फ़र्क होता है। तो डिजिटल करेंसी को आप यही समझ सकते हो कि अगर सेंट्रल बैंक ने इशू करा है किसी भी करेंसी को डिजिटल फॉर्मेट में तो उसको हम डिजिटल करेंसी कहते हैं। ठीक है, चाहे वो क्रिप्टो भी हो, चाहे वो क्रिप्टो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी अगर सेंट्रल बैंक ने कोई करेंसी को लॉन्च किया है तो उसको हम डिजिटल करेंसी कहेंगे। लेकिन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वो होंगे जिनको सेंट्रल बैंक ने बैकिंग नहीं की हुई है। ठीक है, तो एवरीथिंग एल्स, जितनी भी चीज़ें आती हैं जो सेंट्रल बैंक ने नहीं इशू की हैं, उन सब को हम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कहते हैं। ठीक है, तो इस बार जो फाइनेंस बिल है उसमें डिफाइन भी किया गया है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को। तो उन्होंने बोला है कि कोई भी कोड या नंबर या टोकन जो कि एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन या दे रहा है एक वैल्यू को, जैसे अब आपकी क्रिप्टो करेंसी आपको एक वैल्यू देती है, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन देती है उसकी, और उसको आप स्टोर करके रख सकते हो या फिर उसको अकाउंट में रख सकते हो, और उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, स्टोर भी कर सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसको वर्चुअल डिजिटल एसेट कहा जाएगा। ठीक है, तो इसी कंटेक्स्ट में नॉन फंजिबल टोकन जो भी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था ना, कि आप जो है नॉन फंजिबल टोकन्स को भी जो है वो आप पोजेस कर सकते हो, ओनरशिप रख सकते हो उनकी, तो उसको भी जो है वर्चुअल डिजिटल एसेट ही इस डेफिनेशन के थ्रू जो है के मुताबिक जो है वो माना जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है इम्पोर्ट ड्यूटी। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि हायर कस्टम ड्यूटी जो है वो डेली यूज़ के आइटम्स के ऊपर लगाई जाएगी, जैसे अम्ब्रेला, हेडफोन, ईयरफोन, लाउड स्पीकर, स्मार्ट मीटर और इमिटेशन ज्वेलरी के ऊपर, ताकि जो डोमेस्टिक हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी जो है उनको बचाया जा सके, ताकि नहीं तो इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा होगा तो उनको उनका बिजनेस सफ़र करेगा। इसीलिए इम्पोर्ट ड्यूटी को ऐसी जो है प्रोडक्ट्स पे जो कि लेबर इंटेंसिव हैं उनको उनको उनके ऊपर लगाई गई है। ठीक है, तो अब ये मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि हम अभी चाइना से इंपोर्ट करते थे, तो एक तरह से चाइना से इंपोर्ट रोकने के लिए हमने उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी है। तो अब हमने लास्ट ईयर ऐसी टॉयज़ के ऊपर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी ताकि हमारे जो चाइना से इंपोर्ट होते थे टॉय उसको वो कम हो जाए, हमारे जो है लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने टॉयज़ ज़्यादा बेच सकें। तो अब जो है हमने
एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें आप ये देख सकते हो कि 1991 से लेके आज तक हमने कंसिस्टेंटली अपनी इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया है। कौन किन चीज़ों पर? नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर, ठीक है। तो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर हमने कंसिस्टेंटली ओवरऑल अगर हम देखें, ऐसा नहीं कि छोटी छोटी चीज़ों पे तो ऑफकोर्स स्टील स्क्रैप इंडस्ट्री में कभी आप बढ़ा देते हो कभी कम कर देते हो, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो हमने अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कम ही किया है। 150% जो एवरेज होती थी पहले 1991-92 में, वो 40% पहुंच गई 97-98 में, ठीक है। उसके बाद हमने 20% जो है वो 2004 और 5 में पहुंच गई वो, और जो है 2007-8 में वो फिगर 10% तक आ गई। अब ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पे नहीं, एक एवरेज बता रहे हैं कि समझ लो किसी समझ लो आप एग्जांपल ले लो कि टॉयज़ के ऊपर चाहे वो 30% हो, ठीक है, लेकिन एवरेज अगर हम सारे प्रोडक्ट्स का देखेंगे तो हम देखेंगे कि 10% एवरेज जो है इम्पोर्ट ड्यूटी हम 2007-8 में लगाते थे, जो कि एवरेज पहले 91-92 में 150% होती थी। तो ये इम्पोर्ट ड्यूटी में कुछ चेंजेस हैं, ये ट्रेंड्स आपको देखने पड़ेंगे। आजकल यूपीएससी में जो कोई स्टेटमेंट आ जाती है वो ट्रेंड के ऊपर होती है कि इंडिया की ग्रोथ जो है समझ लो 1991 से 90 आज तक जो है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हुई है, या इंडिया का एक्सपोर्ट कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हुआ है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं तो उसको आपको आंसर करना पड़ता है। तो ये ऐसी एक स्टेटमेंट आ सकती है कि नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर इंडिया ने कंसिस्टेंटली एवरेज जो है इम्पोर्ट ड्यूटी वो डिक्रीज़ की है, तो वो स्टेटमेंट सही होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये इम्पोर्ट ड्यूटी होती क्या है। तो ये एक इम्पोर्ट्स अगर कोई करते हैं इंडिया में, समझ लो आप एक इम्पोर्ट का बिजनेस करते हो, तो आपको आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट क्यों ये टैक्स लगाती है? ताकि जो है लोग इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स जो है वो ना लें, उनको महंगे पड़े, तो इस उसकी बजाय वो जो लोग हैं वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स खरीदें, ठीक है। एक तो ये भी फ़ायदा हो जाता है कि डोमेस्टिक जो है कंपनीज़ उनके प्रोडक्ट्स बिकने लगते हैं क्योंकि वो सस्ते पड़ते हैं लोगों को। दूसरा ये भी फ़ायदा होता है कि गवर्नमेंट्स की इनकम भी आ जाती है, उनको टैक्स भी मिल जाता है। और कई बार जैसे हमने अभी चाइना को टारगेट किया है इससे, ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो है आप कई बार इंपोर्ट ड्यूटी उन पर्टिकुलर नेशन से आने वाले प्रोडक्ट्स पे भी लगा सकते हो जिनको आप टारगेट करना चाहते हो या फिर आप पीनलाइज करना चाहते हो, ठीक है। सो हम ये शुरू से करते आ रहे हैं जैसे चाइना के अगेंस्ट, ठीक है। तो चाइना से अभी हमने रिसेंटली इंपोर्ट को कम करने के लिए हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स पे जो चाइना से आते थे उनके ऊपर ड्यूटी को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is INS Wagir. So the fifth submarine of Project 75, which is about INS Kalvari class of submarines. The fifth submarine is INS Wagir has commenced her sea trials. So it was launched in November 2020, and it was launched by, of course, Mazagaon Dock Shipbuilders Limited. And this is undergoing sea trials, and it is being uh, uh, anticipated that this will be commissioned into the Indian Navy by the end of this year after the completion of these trials. Okay, so before going further, we have to understand what is this project 75. So under this project 75, the government of India entered into a technology transfer agreement with the Naval Group of France in the year 2005, and under this agreement, the French group would have to transfer the technology to the Mazagaon Dock Limited, and so that 6 submarines of Scorpion design can be constructed. Okay, so almost all of them have been constructed, or they are either they are undergoing sea trials or they have been already commissioned. Uh, this Kalvari class of submarines take their name from the erstwhile decommissioned class of submarines named submarines named Kalvari, and the first submarine INS Kalvari was also given to us by USSR in 1967 based upon this INS Kalvari, which was the first submarine of India. All these Kalvari, Khanderi, Karanj, Vela, Wagir, Wagshir, all of these submarines were all Soviet origin, and now we are replicating all of them, even the Kalvari class also. Okay, but of course these are the Scorpion design and they are not Foxtrot class of these vessels which were Soviet in origin. Okay, so this is the difference between them. So how a vessel is named? So generally,
all the vessels which have the same make, design, purpose, and displacement, they are named with the first group of first vessel of a group. Okay, like in this case, INS Kalvari is the first submarine. So based upon that, all the submarines which have the same make, purpose, and displacement will be named after it. Okay, of course they will have separate names like INS Vagir, but it will be called as INS Kalvari class of submarine. Okay, so Kalvari means tiger shark, and Wagir, which is undergoing sea trials now, is named after a sandfish. So what? Let us go into the technical details also. So this French defense major company, naval group, and Spanish state-owned entity Navantia, they entered into an agreement with the government of India, and they transferred this Scorpion class of submarine technology to India, and we have constructed this diesel electric transmission systems, and these are the diesel electric submarines now. Okay, so just remember that INS Kalvari is not nuclear submarines, they are diesel electric submarines. Okay, so they can perform a wide range of naval combat operations like anti-warship and anti-submarine operations, intelligence gathering and surveillance, even naval mine laying. Okay, so there is also a system, air independent propulsion system, which allows the non-nuclear submarines to operate for a long duration without access to surface oxygen. So you know that in case you do not have a nuclear submarine, you would need to go up for surface oxygen. But uh, to combat this situation, what we do in non-nuclear submarines, we install this air independent propulsion system, so that even your diesel electric submarines can remain underwater for a longer duration. Okay, so this Kalvari class of submarines are capable of launching several torpedoes and missiles, and they are equipped with a range of surveillance and intelligence gathering systems. So what is the strategic significance of this INS Kalvari? So we have one submarine each, nuclear powered submarine each in Chakra and Arihant, and we have this 14 submarines belonging to diesel electric category. Okay, so we have this nuclear powered and diesel electric submarines, and they have their designated roles in carrier battle groups, which require so we require a certain number of submarines of both types, so that we can maintain the deterrence in our carrier battle groups. Okay, so currently we have less number of submarines than what is required in our carrier battle groups. So that's why we are constructing more and more, so that we can complete the carrier battle group formations. Okay, so now let us see the next topic, which is World Wetland Day. So on February 2nd, we celebrate the World Wetland Day, and on this very occasion, India has announced the establishment of a Center for Wetland Conservation and Management, okay, which will be located, of course, in Chennai. So what is a wetland? So wetlands are those transitional lands which are located between terrestrial and aquatic ecosystems. Okay, so on this very occasion, we also launched two Ramsar sites: Khijadia Wildlife Sanctuary, which is located in Gujarat, and Bakhira Wildlife Sanctuary in UP. Okay, so after the inclusion of these two sites, we now have total 49 Ramsar sites covering an area of more than 10 lakh 93,000 hectares. That is about 1.909 million hectares. Okay, which is the highest in South Asia. So the theme for this year's World Wetland Day was wetlands action for people and nature. Okay, so currently India has about 4.6% of its total land as wetlands, and it covers an area of about 15.26 million hectares, and the 49 Ramsar sites cover an area of about 1.09 million hectares. Okay, like we have seen it here, 49 Ramsar sites covering an area of about 1.09 million hectares. So the significance of this Center for Wetland Conservation and Management is that it will allow the central and state governments to uh,
implement policy and regulatory frameworks in coordination with each other to conserve the wetlands of national importance. So about the Ramsar Convention, it's an intergovernmental environmental treaty. It came into force in 1975. Of course, it was signed in 1971 in the Iranian city of Ramsar, and it has three basic pillars. So the first one is wise use of all wetlands. The second one is effective management of wetlands, and the third one is cooperation, international cooperation, so that the transboundary wetlands and shared wetland systems and species can be conserved. Okay, so it is basically about conserving and wise use of all wetlands. So currently India has the 49 Ramsar sites. The first Ramsar site to be listed on Ramsar Convention was Cobourg Peninsula in Australia, which was designated as the Ramsar site in 1974. So UK has the most number of Ramsar Convention sites, and Mexico is the second in number. So Ramsar Convention is not legally binding. It is very important for you to understand this, and it is neither a part of United Nations nor the UNESCO system. Okay, so now let us see the next topic, which is virtual digital assets. So Union Finance Minister in her budget speech has announced that the government will be uh, taxing these virtual digital assets at the rate of 30%. Okay, so even any income derived from virtual digital assets will be taxed at 30%, and a TDS amount will also be applicable in case of transfer of virtual digital assets. Of course, that would be applicable above a monetary threshold. So they have also the budget has also defined what is a digital currency and what are the virtual digital assets. So the budget has clarified that any currency, even if it is a cryptocurrency, but if it is issued by the central bank, then it will be classified as a digital currency, and everything else is will be labeled as the virtual digital assets. Okay, so they have also clarified with the definition that what is a virtual digital asset. So it is a very wide definition under this law. So uh, any number, any information code or token which has a digital representation of value, and it has a store of value or a unit of account, and it can be transferred, stored or traded electronically, it will be known as a virtual digital asset. So is digital rupee a virtual digital asset? No, it is a digital currency. But is cryptocurrency a virtual digital asset? Yes, it is, because it is not issued by the central bank. Okay, so even the non-fungible tokens about which we read just a few days ago, it is also a virtual digital asset. Okay, according to this definition. So now let us see the next topic, which is import duty. So to protect domestic industries from which are involved, which are having labor intensive, which are still using labor intensive technology, the Union Finance Minister has introduced higher custom duties on such items of daily use like umbrella, headphone, earphones, loudspeakers, smart meters, etc. So why an increase in import duty? Because most of these products are imported from China, and like last year we increased the import duty on toys, we have also increased the import duty on these items of daily use, so as to prevent to prevent our domestic industries against the imports from China. Okay, so custom duties have been consistently decreased. If we consider it, if we calculate the average of import duties on non-agriculture products, it has come down steeply. It was about 150% average in 1991 and to 1992, and it came down to 40% in 1997 and 1998, and then in 20%, and later on 10% at 2007 and 8. Okay, so these are the average figures on non-agricultural products. You know that or for every product there is a different kind of import duty. So if we consider the average number of import duty on non-agriculture products, it has consistently come down. Okay, so why I'm discussing this? Because these kind of statements come in your exam, in which UPSC asks you by giving a statement that India's exports have been increasing consistently since 1991.
since we introduced the LPG policies. So such kind of statements are important for you to see the trend. Okay. So what is an import duty? It is a tax collected on imports. So the wider term is customs duty, because custom duty includes both the import duty as well as the export duty. So apart from, of course, the dissuading imports in India by increasing the price of imports so as to incentivize the domestic manufacturers, it also raises income for the government. Okay. So and it is utilized as a tool to penalize a particular nation, like we are penalizing China. Well, because we want to dissuade imports from China and we want to enhance the capability of our domestic manufacturers, we are raising the import duty from products which we generally import from China. So this is how import duty is utilized by the government, uh, both strategically or geo-economically, as well as for raising of revenue. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.